It's time for hoops and balls, guys. This is going to be absolutely epic. Yes, it's time for hoops and balls. Your one channel for football, basketball, or any kind of sports that is played with a ball. This is your one stop solution for it. Top quality gaming content of these sports. जब तुम स्पोर्ट्स और गेमिंग को कंबाइन करते हो, दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ अमेलगमेशन दैट यू कैन हैव. एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज अब करियर मोड हो, चाहे वो बास्केटबॉल का करियर मोड हो, चाहे वो क्रिकेट का करियर मोड हो, चाहे वो फुटबॉल का करियर मोड हो, बस वी आर गोइंग टू प्ले सो मैनी स्पोर्ट्स ऑन दिस वेरी channel. So all you have to do is subscribe to this channel and trust me, you will not regret this. As Indians, we put tags on certain things very easily. I mean, we are more than a billion, but the kind of fan following cricket has, no other sports has. भैया मैं क्रिकेट का एंटी नहीं हूँ, मैं तो खुद सारे मैच IPL के देखता हूँ, मैं तो खुद सारे मैच इंडिया का कोई भी मैच हो मैं देखता हूँ. बट बात यह है कि हम दूसरे स्पोर्ट्स देखते नहीं, पर मैं सुबह सुबह उठकर NBA का प्लेऑफ भी देखता हूँ. तो इसलिए भाई तुम समझो इस बात को, हमने गेमिंग में भी यही साला रायता फैला दिया, एक यॉनर पकड़ के रख लिया कि भैया अगर ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, वो फ्री फायर और बैटल रॉयल टाइप गेम में खेल रहे हो तो सही है, कोई और गेम अपन खेलेगा ही नहीं, ये नहीं करना. इसीलिए इसी तर्क पर तुम्हारे लिए ये चैनल है जहाँ पर बास्केटबॉल, फुटबॉल का बहुत बढ़िया करियर मोड आने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रॉकिंग. बार मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ यार, क्योंकि ना मुझे बोलने में इंटरेस्ट है, मैं भी इंटरेस्टेड अगर किसी चीज़ में ये हूँ तो वो ये है कि मैं अपनी जर्नी शुरू करूँ इन माई NBA, और तुम लोगों को भी उतना इंटरेस्ट होगा कि लेट्स प्ले सम बास्केटबॉल. So we are going to be kicking things off by not kicking the ball, but by hooping the ball. Now the biggest decision is going to be which team we are going to select. Now I am confused between two teams. एक तो Golden State Warriors है and एक Chicago Bulls है. Chicago Bulls की तरफ मेरी inclination बहुत ज़्यादा है because we all know अगर if you are a 90s kid, then you know that what this team meant for us. I mean, this was one of the best teams going around the world, the biggest brand in the world, and it was just absolutely insane. Doing three-peat twice, so they win 3 titles in a row, then there is a little gap, and then 3 titles in a row once again. So the team that I'm going to select is going to be Chicago Bulls. This is the toughest job that I'm taking. बिकॉज NBA में अगर आज के टाइम पे क्या है, तुम माइकल जॉर्डन के से पहले और माइकल जॉर्डन के बाद शिकागो बुल्स ने एक भी टाइटल नहीं जीता, कभी भी NBA चैंपियंस नहीं बने. तो तुम अपने आप हिसाब लगा लो उस इंसान की, वो इंसान ही नहीं था भाई, उस लेजेंड का जो इम्पैक्ट था ऑन द टीम, इट वॉज इनसेन. सो वी आर गोइंग बैक टू शिकागो बुल्स एंड वी विल ट्राई, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्राई करूँगा टू ब्रिंग दोज ग्लोरी डेज बैक टू शिकागो. सिटी ऑफ शिकागो एब्सोल्युटली डिजर्व्स इट. एंड हियर वी गो मैन. ऑटो जनरेटर प्लीज. हाँ. LeBron James plans to retire and is eligible for a farewell tour. If you say yes, their plans to retire cannot be. I will say no यार. Come on LeBron, अभी खेलते रहे यार, अभी तो बेटा तुम्हारा टीम में आया. First game is going to be against Detroit Pistons. Oh my God, this is going to be a difficult game. पर उससे पहले मुझे थोड़ी सी चीज़ें करनी है. यहाँ पर मुझे सच बात बता रहा हूँ, मुझे फ्रंट ऑफिस में क्या कुछ काम चलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है. मैं ज़्यादातर चीज़ें सिमुलेट ही करने वाला हूँ. येस, ऑन कोर्ट एक्शन तुम्हारा भाई संभालेगा, बट ऑफ कोर्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है. बस हाँ, जब कोई बहुत ही अच्छी साइनिंग हमारे पास आएगी, दैट इज ओके. ये एक ट्रेड मुझे सही लग रहा है. हमारे पास से ट्रे जोन्स जाएगा और आइसैक एकॉरो जाएगा, बट वी विल गेट ड्रेमॉन्ड ग्रीन and Gui Santos. Gui Santos is okay-ish type when it comes to his 3-point shooting, but Draymond Green is fantastic when it comes to perimeter defense. And here we go with 2 players that come to my team. So देखो, अभी ये ट्रेड मैं समझूंगा. मुझे पता है यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी कोई गलती भी होकर ही हो सकती है, बट इट्स ओके. आई थिंक यहाँ पे धीरे धीरे समझूंगा. मैं इतना किताबी नॉलेज नहीं लेके आ सकता इन चीज़ों की,
So it's okay. So here we go with our first game against Detroit Pistons. It is going to be absolutely insane because my first game is going to be my first home game as well. So here we go. We are starting our first, जैसे मैंने बोला, not just our first, but India's first My NBA series on YouTube. It's a big thing for me, to be honest with you. So here we go. We have made our first trade. I don't know whether that trade is good or not, but here we go. Draymond Green will be a good pick for us, I'm sure. बहुत बढ़िया. Here we go with Draymond Green straight away. Come on, come on, come on. Beautiful. Josh Giddey with his 3 points. Yes, man. That's the perfect start. देखो अब मेरा जो खेलने का तरीका वो तो 3 पॉइंट वाला ही. अब यहाँ पे फुटबॉल की तरह ज़्यादा खुशी नहीं ले सकते. पकड़ पकड़. बहुत बढ़िया ड्रेमॉन्ड ग्रीन यार, बहुत बढ़िया. Josh Giddey. Beautiful. Here we go with Josh Giddey. Draymond Green. Giddey. Beautiful, man. Come on. Let's go, boys. आजा आजा. Hey, yeah. Beautiful. अभी डालते रहेंगे यार. देखो ये बकेट्स तो डलती रहेंगे, तो इसके बारे में इतना नहीं सोच सकते. उसी तरह बकेट डालने के बाद भी ज़्यादा नहीं सोच सकते. अरे 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 अरे. नहीं यार. Come on. That's beautiful from Santos. अब Santos और ड्रेमॉन्ड ग्रीन ये दोनों हम गोल्डन स्टेट वॉरियर्स से लाए, तो इनका बहुत जल्दी सेटल होना हमारे लिए बहुत जरूरी है. Let's go for it. No, yeah. Come on. यहाँ पे पूरा शॉट क्लॉक अगर मैं खेल जाऊँ तो बढ़िया हो जाएगा. Is Buzelis. Josh Giddey. पीछे आ. 3 पॉइंट पे रहे. नहीं यार पारस. So the first quarter is over. My first quarter in NBA. This is a good start, to be honest with you, because ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं डाली इसमें ना. अभी तक क्या है कि इतनी प्रैक्टिस भी नहीं डाली मैंने, तो इसलिए मुझे बल्कि खुद नर्वसनेस ही जब मैं ये मैच खेलने लगा था कि भाई इतना बड़ा पोपट भी ना हो जाए, क्योंकि हमारा पहला माई एनबीए का मैच है, कि इतना बड़ा पोपट ना हो जाए कि बिल्कुल ही हम पर. यहाँ तो अपन लीड में आ गए. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. आराम से आजा काका. नहीं, बल्कि वो छोटा हो गया ऊपर से यार मीटर, बल्कि ही वाज नॉट फिट फॉर दैट आई गेस. वो जेलिस को देना चाहिए था इससे बढ़िया मेरे को. बहुत बड़ा गैप दे रहे हो. किसको दे रहे हो गैप इतना बड़ा? तो आराम से. दैट इज ब्रिलियंट. ब्रिलियंट पारस, बहुत बढ़िया. आपा ने भी डिफेंड कर लिया, बहुत बढ़िया बात है. 3 पॉइंट की लीड है हमारे पास. Dillingham. Here's Buzelis. बहुत बढ़िया. Come on. Here's Draymond Green. Here we go with Sexton. Beautiful. Come on now. Yeah. नहीं गई. बहुत बढ़िया पारस. डिफेंसिव एलिस. ग्रीन. Josh Giddey. 3 points. कोई बात नहीं. टेंशन नहीं लेने का. यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का. आजा बाबा. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. ड्रेमॉन्ड ग्रीन. तेरी भैंस की. नहीं. गिडी. पारस.
बहुत बढ़िया यार, come on. Elvis Simon, come on. Elvis Santos. Oh yaar, that was so close. Green, no. Oh, Green. Here is no. आराम से सोचो, थोड़ा सोचो भी. इधर आओ, कोई इसके आगे आओ. नहीं यार, क्या कर रहे हो? That was आराम से. चलो. नहीं है भगवान, अब 3 पॉइंट नहीं अंदर जा रहा. अबे डिफेंड कर ड्रेमॉन्ड ग्रीन. Here we go. Come on, man. That's the slammer dunk, man. Brilliant. Hey, Sexton. Beautiful. 2 in a row. We have a 20-point lead now. आजा काका. Oh, good one. Okay, 19 seconds for the third quarter now. Sexton, no. Okay, keep going back now. Just 4 seconds. यहीं पे दूर रखवा इसको. नहीं डाला. That's it. 15-point lead going into the final quarter. That's great, I guess. Good. And we are winning it. I guess we are winning it. मुझे नहीं पता how you can fluff it from here. I have no idea. ठीक है, इतना experience है ही नहीं है. ठीक है ना, इतना experience अपने पास है ही नहीं कि I can figure out how I can fluff it. So I know it can be done. It can be turned around still. भाई साहब, नहीं यार, और ज्यादा घई ना मचाओ ना 3 पॉइंट मारने के लिए. ये तो 3 पॉइंट ही मारेगा. बहुत बढ़िया. ओके, आजा काका, आओ यार, क्या कर रहे हो? आराम से. नहीं यार पाराज, ये तो नहीं जाना था ना. ओए ओए ओए, जस्ट स्मिथ डज सो वेल. ब्यूटीफुल. कम ऑन. ही इज माय मेन प्लेयर. पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही. जॉश किडी कुड बी द वन हु विल बी माय मेन प्लेयर इन दिस सीजन. ओ भाई साहब, बचा लो. नहीं बच. बहुत बढ़िया मैन. कम ऑन. जॉश गिडी विद द 2-pointer. Giddy! Come on! Fantastic from Josh Giddy. Well, I think with today's up-tempo style, more players have to cover more ground. It just makes sense that younger Sala. are better equipped to handle. Okay, 50 more seconds to go. 12-point lead. We are winning it. Come on, man. Chicago Bulls. नहीं यार, अबे यार, ये एली-ऊप करके देखता हूँ मैं. रुक जा. With Draymond Green we can do it. So let's try this. Here we go, the final play of the game. I'm going to keep the ball. Yeah, he was just laser focused in that game. It got to the point where you just knew if he shot it, it was going in. Green. नहीं यार, that is it. Our first win in our first game in our first My NBA series.
Fantastic, man. This is what I was talking about way before we started off this series, that oh my god, we are going to have so much fun with this series. We are going to have so much fun with this series, guys. Trust me, nothing will get better than this, as Josh Giddey is our player of the match. पर अगर हार जाते तो ऐसी फीलिंग आ जानी थी कि भाई सीरीज सही भी शुरू करी है कि नहीं. एंड there are going to be so many games. This is also going to be very something new for all of you guys to see. अगर आप लोग बास्केटबॉल में नहीं हो ना तो ये चीज़ देखो, 82 games will be played in the regular season. 82 games will be played in the regular season. So there will be an Eastern Conference. Here is the Eastern Conference. And there will be the Western Conference. 15 in the Eastern, 15 in the Western. And then each division, जो हर एक division है, that is divided. There are 15 teams in each conference, and then they are divided into 3 divisions within the conference. Like Eastern Conference है, उसमें अपना एक अलग से 3 divisions है, और हर division में 5 टीमें. We have a game against Orlando Magic after 2 days. Then after 1 day we have a game against the Atlanta Hawks. Then after 1 day we have a game against Sacramento Kings. Then after 1 day we have a game against New York Knicks. So we have to keep our heads down and keep on grinding those victories. That is what is the most important part. अब ये नहीं सोच सकते कि यार पहला मैच जीत के मज़ा आ गया. नहीं, तुम इसी महीने में, एक महीने में तुम लगा लो, अगर 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है तो 22 नवंबर तक तुम ऑलमोस्ट 15 से 20 मतलब 10 से 15 गेम्स खेल चुके होगे. उसमें अगर तुम्हारी बैंड बज गई तो तुम्हारी पहली विक्ट्री किसी काम की नहीं है. सो वी हैव अ गेम. अब मैं अगर ट्रेडिंग की बात करूँ, अब ट्रेडिंग में क्या है कि यहाँ पर मेरे लिए ये नई चीज़, ठीक है ना, और तुम्हें पता है कि आई एम नॉट दैट हैप्पी विद व्हाट आई हैव राइट नाउ. Like Sexton is a good player because of the fact that he is good in 3 points and all. But let me find a better deal with these 2 players. I need one guy who is proper 3-point like a Steph Curry. That is what I'm looking for. मतलब Steph Curry जैसे मुझे कोई प्लेयर मिल जाए, मुझे मज़ा आ जाएगा, जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इन 3 points and all. तो अभी तो मुझे अच्छी कोई डील मिली नहीं. So what we can do is we can just take Sexton out of it and put in Draymond Green. You find me a better deal now. Memphis are giving me no. Now we are getting Zach LaVine and Malik Monk. Should we be bringing him back? They're also taking the 2026 second round pick. Swap best with Trailblazers. And what is exactly Malik Monk? He is a A- in the, and Zach LaVine is a A. Probably a deal that I am interested in. And if I am giving away, look, again defensively we are talking about salaries that we're going to be paying is more. Okay, let me see other offers as well. Best deal I'm getting is Zach LaVine. पहले तो मुझे खुद नहीं समझ आता था कभी कि why did they even let Zach LaVine go, but we have to think about certain things. इसमें कुछ है यार जहाँ पर इंजरीज वगैरह भी, हॉट जोन, शॉट चार्ट, बॉडी हेल्थ, इंजरी हिस्ट्री, there is no history like that. He's playing for the Sacramento Kings. Probably not the best decision. If Zach LaVine can come, then I can get that 3-pointer in as well. So yes, I'm going to go with this. I need him. Beautiful. See, मुझे पता वो ड्रेमॉन्ड ग्रीन वाला क्या था कि मैंने बहुत, I think बस मुझे वो एक ट्रेड करनी थी. And if we can trade him right away, that's great because that increases my, my leverage on certain trades because Draymond Green has that name. But we needed Zach LaVine.
मतलब जैक लेवीन क्यों गया पहले तो शिकागो बुल्स से, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज पिछले 2-3 सालों में तो मैंने बिल्कुल भी 2-3 क्या 3-4 सालों में बास्केटबॉल बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा, तो इसलिए मुझे नहीं पता। बट बिकॉज मैंने 2 साल पहले जब जैक लेवीन था टीम में तब भी NBA खेली थी, एंड आई फाउंड हिम द परफेक्ट प्लेयर फॉर मी बिकॉज माई गेम इज़ अबाउट द 3 points guys. My game is that, so I found him to be the perfect player for me. And now I think we are set for our second game against Orlando Magic. Lo bhai, Zach LaVine is back at Bulls. It was a very weird kind of a trade because वो Draymond Greens हमने अभी तो ट्रेड इन किया था और उसको फिर हमने इस चीज़ में भी लगा दिया, and we got Zach LaVine. I think Draymond Green although defensively was very good for us. I mean एक ही मैच खेला हमने, बट वो मैं तुम्हें बोला ना पहला एपिसोड पहली बार ही कोई माई NBA खेल रहा है, सो देयर आर गोइंग टू बी मिस्टेक्स दैट विल बी मेड बाय मी एंड प्लीज अंडरस्टैंड अबाउट इट. Here we go away at the Orlando Magic. This is not going to be easy. This is not going to be easy whatsoever. Home court advantage is A+. Oh my God. अच्छा मैं इतने स्टैट्स क्यों पढ़ रहा हूँ? आराम से ओ भाई साहब कोई ना, इट्स ओके. Josh Giddey. Winning these away games are not easy in basketball. There is Zach LaVine. Josh Giddey. Porzingis. Ay yaar, Paras. Here we go with Jalen Smith with a dunk. Beautiful. He has that height. तभी मैंने Jalen Smith को बोला कि let's start off with Jalen Smith, not Collins. Zach LaVine with 3 points for Zach LaVine. अबे कोई ना. Zach, क्या कर रहा है? लिटरल धक्का था भाई. And we get yes. ओ भाई अब देखे. Good one. Beautiful, perfect one, Paras. बहुत बढ़िया. Do we get one more? Why यार? Hey, yeah, 3 points. Good one. A good start for us. Away from home, my first away game. कोई बात नहीं. नहीं, ओ बहुत बढ़िया, बचा लिया अभी तक तो. Zach LaVine क्या करेगा आप? पारस बहुत जगह दे दिया. 3 पॉइंट की जगह दे दी एंड दे हैव जस्ट अ 2 point deficit now. मिलर नहीं, मेरे भाई. Then I got him. He can run as well. 3 points. Yes, they put it in. They have the lead now. Okay, here we go. Zach LaVine. Beautiful. तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पर सब. Zach LaVine, beautiful. I mean, he is fantastic. He's been fantastic so far for me. And what the hell is this, Paras now? यार इतना easy ना बनाओ.
Come on, Paras, बहुत बढ़िया. That is the challenge that I wanted to conquer. You know, everybody knowing that I'm going to shoot and still being able to put that in. That is fantastic. गोल मिस कर दे तो उसके बाद मौका नहीं मिलेगा. Just forget about it. Defense पे अपना ध्यान दे. And make the most of it now. Wagner's got the lead up to 3 now for the Nets. Yeah, the chemistry has been terrific. Really impressed with their offensive execution. You know, defense has really been kept off balance. नहीं यार, that was so close यार. ये तो जाना चाहिए था. Made off an assist. Now, here's Bain. Oh भाई, 3-pointer, 33-27. I think that's a big And this is the final opportunity for us. Going into the first half break. keep knocking that shot down from deep to round out his offensive game. Giddy with it. Black defending. On the wing, Giddy. Pass to Buzelis. Come on! That's the 3-point of our own. And now it's a 3-point lead for Orlando. He's got 3 assists now in this one. भाई ये ट्राई करेंगे कि इनके पास वो लास्ट अपॉर्चुनिटी है. Left side, Bain. अरे पारस को कितनी जगह देती तूने. थैंकफुली फॉर्चुनेटली ही मिस्ड. बट बहुत स्पेस दे दी थी यार. ये तो बहुत स्पेस देने वाली बात. Well, आराम से. think of how much more of the court that has to be covered in the style. You have to score more. Zach Levine, beautiful 3 points straight away Incredibly impressive. into the third quarter, and we have All the switches the scores level now. hold up against size and play all over the floor. So the Bulls 5 right now. In the backcourt, it's Giddy and Levine. Buzelis out there with Smith. And it's Santos in at the 3, the small forward. Now Levine. After Paolo Banchero misses from long range. Pass to Santos. Now Giddy. In the corner, it's Buzelis. Outside Levine. For the lead. No, that was not good positioning, I think. कोई भी नहीं भाग रहा. सारे उस पे खड़े थे सर्कल पे. नहीं यार. On the wing, Levine. Guarded by Bain. Buzelis, beautiful. Not even 3 This was good, Paras. Come on. So many lead changes. See, this is the change. This is how we will evolve. Should have paid to watch this one. It's जितने मैच खेलेंगे ना उतना समझ आएगी चीजें. अब ये भी मेरे को समझ आया कि ये भी एक मूव अच्छा बन सकता है. And we're just about सिर्फ 3-pointer नहीं. taking for 3. भाई वो 3 पॉइंट मार रहे हैं. भाई साहब ये मैच तो खतरनाक जाने वाला है. आएगा कोई? जेलन कम. Smith with a screen on Suggs. Levine. Beautiful from Zach Levine. So Giddy with the assist. And now we have a single point lead, I know, but we have a lead. Come on. been played with real discipline for a young And Buzelis puts it in. It's a 5-point lead for us now. with his soft touch around the rim. Buzelis should score a lot of points आजा. in the paint over his career. आजा काका. Pass to Banchero. And here's Carter. कोई बात नहीं. ये तो यहाँ पे तो तुम्हें अपनी ईगो दबानी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि वो बास्केट ही नहीं डाल लेंगे ना. With Zach Levine, yes man, come on, he's in red hot form right now. Giddy. On the wing, Levine. Takes the Come on, beautiful man. Ka! berries his Any offense too. ये बच गया. You've got a big guy that can pass. And with these teams locked in a very close contest, this fourth quarter promises to be Zach Levine, beautiful man. Come on. He's scorching hot. Another three. And he's approaching the franchise record for threes. ओहो भाई साहब. Here's Suggs. Tried to come right back with the 3 of his own, but it's no good. Outside Collins. And they क्या हुआ? get an illegal screen here. यार ये क्या है? For the league is to really crack down. ये क्या है इलीगल स्क्रीन यार? कोई प्लीज मुझे बता देना यार. Might have gotten a good look at all. Levine Right side Levine. goes for it. No. Side for Sexton. Back to Levine. There's the triple. Oh man, beautiful, Paras. क्या बात है? Levine's know we'll win if we play hard. Let's see how Hey, all right, Allie, thanks. get it down to 11. Lee's got 2. Where's Collins? Levine, The 3. bang man, come on. Distance. And this parade of
best threes in the game for a short while. It's been that kind of takeover display that we've seen here. That's the record, man. And of course it falls for him. That Oh, three beautiful. That's a league record, single game record for Zach LaVine The most threes in his first game. tonight we will never forget. in all those great shooting performances. We will beat that. Well, this night belongs right there with him. Now Smith. Fires the three. That's the record. We beat that record, man. Come on, in NBA history, that's the most three-pointers. It's an NBA record for Zach LaVine on his debut. Whatever they wanted. Zach, come on. Zach LaVine with the 16th three-point in this game. Season, it's a great A record I don't think that will be beaten in a long time. The one player that really stands out, of course, in this one. What a debut. It's like he never wanted to leave. outpouring of points from him. Nobody could do चलो आजो 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 आजो. from dropping it in. Monk kicks to LaVine. LaVine पारस यार बहुत बढ़िया. Sensational. 60 points. This guy cannot be stopped. They've had no answer for him in this one. Outside, Suggs. Wagner with a screen for Suggs. Here's There was such a tough competition going on between the two sides until Zach LaVine just decided, no, I have to shine. Sexton dishes to LaVine for three. That's just asking too much. And that is 2 wins in a row for Chicago Bulls. But this time, just one man. This was one man being Feel at home. I mean, a rock star on the night. full performance all the way around. NBA record for the most three-pointers in one single game, beating Klay Thompson. Zach LaVine is the player of the game. His first game back. What a fantastic second game यार. जिस तरीके से गेम शुरू हुई थी ना, जहाँ पे बहुत क्लोज चल रहा था सब कुछ. I think बहुत नेक बिल्कुल नेक टू नेक रेस चल रही थी. But then Zach LaVine turned up, and what a game, man! What a game! The record for the most three-pointers in one single game, and I'm talking about कि Klay Thompson ने वो record 12 minutes per quarter वाले गेम में किया था और हमने 5 minutes per quarter वाले गेम में किया. Back with a bang, Zach LaVine, a record तोड़ performance और a second win for us. That is fantastic. और ये तो अवे विन थी तो इट इज़ इवन मोर सेटिस्फाइंग फॉर मी. बट द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट इज़ कि थोड़ा सा एक जो ट्रेड किया हमने वो सक्सेसफुल रहा. मुझे भी थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी ना. अब जो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे दिमाग में चल रही वो ये है कि यार ये मैच तो बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं और बहुत सारे मैच. ऐसा नहीं कि मैंने फुटबॉल में जैसे मैं 2 मैच खेल लेता हूँ उसके बाद एक मैच और खेल लेता हूँ फिर मैं सोचता हूँ कि चल बहुत है. बट अगर मैं तीसरा मैच भी खेल लूँ एक तो एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा और भी मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इसकी एडिटिंग करनी है. लेट्स एंड इट ऑन दिस पॉइंट बिकॉज भाई क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी एंड फैंटास्टिक एंड वी आर अप एंड रनिंग एज वेल विद माई NBA with Chicago Bulls. So Bulls, we are bringing them back. It is going to be absolutely fantastic. अब मुझे नहीं पता that we will be able to bring them back to that level of, the MJ days. I don't know, but Chicago Bulls, they deserve to be back. That is a brand. जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर 90s kid हो तो you know exactly what I'm talking about and what kind of brand we are talking about. That was a legendary team. It still lives in our hearts. And if you have no idea what I'm talking about what Chicago Bulls was, on Netflix, The Last Dance, please watch that series. You will exactly know what I'm talking about. So, anyhow, guys, I'm going to wrap up the episode here only. Thank you so much. Hoops and Balls. So, this channel, please, guys, make a note of it. Subscribe to it. It will be legendary. Trust me. This will be written in history. Trust me that as well. Like we wrote Zach LaVine's name in the history books today with the most three-pointers in one single NBA game. That was fantastic. Take care. I'll see you in the next episode. Bye-bye.